हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गल्फ जाना चाहते हैं या फिर गल्फ जाने के बारे में सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं गल्फ में कैसे जाऊंगा और एज ए HVAC टेक्नीशियन मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लाइंट किस तरीके से इंटरव्यू लेगा और किस तरीके से सवाल करेगा और आपको कैसे जवाब देना है, कैसे क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस पे मैंने 2-3 वीडियो और बनाए हुए हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि आपसे क्लाइंट जो है किस तरीके से सवाल कर सकता है। तो सवाल करने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि आपको क्लाइंट, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो क्लाइंट आपसे इंग्लिश में बात करेगा, क्योंकि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में ही आपसे क्वेश्चन करेगा, आपको इंग्लिश में ही आंसर करने हैं। तो आपसे सवाल कर सकता है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है क्लाइंट की टेल मी कंप्रेसर रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। तो आपको कुछ इस तरीके से आंसर करना है। Sir, when we will reach the site, firstly we will turn off the power supply. After power supply turn off, we will make sure there is no power in the system. We will make sure there is no power. After that, we can start the work. So firstly, we will remove the compressor electrical connection from the compressor, and then we will release the all freon from the system, and then we will open the baseboard from the compressor. And if compressor, where is compressor connected from the suction line and discharge line? So if compressor suction line and discharge line is brazing type, so we will use acetylene oxygen to debraze suction and discharge line from the compressor. If suction discharge line by flange type, so we will use socket set to open the bolt and isolate flange from the compressor, suction and discharge line both. And if suction line and discharge line flaring type, so we will use big screw spanner or pipe wrench, so we can open the layer from the compressor, suction and discharge line. After isolate suction and discharge line from the compressor, we will remove compressor from the base, and then we will isolate liquid line dryer filter from the liquid line, and then we will flush the system completely, high side and low side. High side and low side means condenser side and evaporator side. Completely we will flush the system, and then again we will install the compressor and make the wiring connection and join the suction line and discharge line with the compressor. And then again we will change the liquid line dryer filter. We will replace old one and change new one, and we will install new one in the liquid line dryer filter. So, and then we will charge N2 nitrogen to check there is no leakage. After we will charge the nitrogen, we can charge 150 psi or maximum 300 psi in the system, N2 nitrogen to check leakage. If there is no leakage, we will release the nitrogen, and we will vacuuming the system till 30 inch of mercury or 500 micron. After vacuuming, we will charge the freon and turn on the power supply, and we can start the compressor. This is the compressor replacement procedure. सो यह इतना कहने के बाद कहने के बाद जो है आपको स्टॉप हो जाना है। तो अगला आपसे सवाल कर सकता है, ओके टेल मी हाउ टू रिप्लेस कंडेंसर फैन मोटर। तो आपको कुछ इस तरीके से जवाब देना है। सर, फर्स्टली वी विल टर्न ऑफ द पावर again, and we will make sure there is no power supply. After we will make sure there is no power supply, we will remove the condenser fan cable from the condenser fan contactor, and then so we can remove the blade, and again we will remove a condenser fan motor from the system, and then we will replace the new condenser fan motor. We will install a new fan blade in the condenser motor, and then we will reconnect the wiring to the condenser fan motor contactor, and then again we can
start the power supply and then we can run the condenser motor. So इस तरीके से आपको जवाब देना है. अगर आप इस तरीके से जवाब देते हैं, आई होप कि आप पास हो पाएंगे. तो अगला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर की, ओके टेल मी व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एफसीएस, एचपीएस एंड एलपीएस एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्विचेस. तो कुछ इस तरीके से आपसे सवाल कर सकता है कि एचपीएलपी, एचपीएस, एलपीएस और एफसीएस क्या है और आपको इसमें क्या क्या डिफरेंसेस लगता है. तो आपको कुछ इस तरीके से जवाब देना है. वी कैन कॉल दीज आर द स्विचेस लाइक एचपी स्विच, एलपी स्विच, एफसी स्विच. इट्स मीन low pressure switch, high pressure switch and fan cycling. These are all switches. So there is some differences. For example, there is LPS. LPS function is when our system, when our HVAC system refrigerant will be low, so LPS will be cut off the compressor and your system will be tripped due to low pressure. So also HPS, LPS we are calling safety device. So HPS function is whenever refrigerant pressure will be high or cross the set pressure of HPS. So HPS function is this situation. HPS function is cut off the compressor and your system will be tripped due to the high pressure. So in this situation, for example, your condenser fan is not working. So in this situation, your refrigerant pressure will be high and your system will be tripped due to the HPS if HPS is installed in your system. And for example, your condenser coil is too much dirty or completely blocked with dust. So in this situation, your refrigerant pressure will be high and then your system will be tripped due to the HPS. It's mean high pressure switch. So FCS function is, for example, in your system, in your HVAC system, there is a two condenser fan motor. So one is connected to the compressor, one is connected to the FCS. FCS function is whenever refrigerant pressure will be high or condenser temperature will be high, so FCS will turn on the another condenser fan motor and pressure will be maintained. So how it is work? Simply, for example, pressure will be high. For example, your system pressure is 200 and FCS set pressure is 210 or 220 or 230, for example. So whenever your system pressure will become your discharge high side pressure, this is high side pressure. So whenever your high side pressure will be rise above the 230, so FCS will be activated and send command to the condenser fan motor contactor, which is connected to the FCS, means fan cycling switch. When condenser fan motor contactor will be activated, so another condenser fan motor will be start. So if any HVAC system there is FCS, it means there is two condenser fan motor or more than two condenser fan motor. For somewhere I saw there is one condenser fan motor which is connected to the FCS. It's mean compressor will be start first and then when pressure discharge pressure will be high, so after cross the FCS set pressure, so FCS will be activated and send command to the condenser fan motor contactor and then condenser fan will be start. So this is the function of FCS and this is the differences between FCS, LPS and HPS. सो कुछ इस तरीके से आपको जवाब देना है. अगर आप इस तरीके से जवाब दे रहे हैं तो उम्मीद है कि आप पास हो पाएंगे. और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो अगर आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, तो मैं हिंदी में जो है इंटरव्यू कैसे देते हैं वो सब मैं आपको बताऊँगा. तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ इसमें, वो बात ये है कि अपने इंटरव्यूअर के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहें, सच्चा रहें. क्योंकि अगर आपसे इंटरव्यूअर कुछ सवाल करता है, अगर आप उसके कुछ जवाब देते हैं, तो अगर आपको इंटरव्यूअर पास करता है तो आपसे ये उम्मीद करता है कि जो आप सवालों के जवाब दिए उतना काम आपको एटलीस्ट आना चाहिए और उतनी आपको समझ में होनी चाहिए. क्योंकि अगर आपको इंटरव्यूअर किसी कंपनी का HR होता है या फिर मैनेजर होता है, अगर वो अपनी कंपनी में लेके जाता है तो इस उम्मीद के साथ लेके जाता है
कि आप जो है जो भी इंटरव्यू में सवाल किए गए हैं उसके उम्मीदों पे खरे उतरे और जो है अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आप जब भी कभी भी जो है आपको इंटरव्यूअर आपके क्लाइंट के साथ जो है ऑनेस्ट रहना है। अगर झूठ बोल के आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आके कहीं भी जाके अगर आप रोड में जाते हैं तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। हो सकता है कि आपसे मैनेजर, एचआर या जो भी वो पोजीशन पे है जो आपको लेके आया है, हो सकता है दूसरा कुछ काम कराने लगे। तो ये सब आपको नहीं करना है। जो आपको आता है हाँ बोलिए, नहीं आता है ना बोलिए। एटलीस्ट 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, और थोड़ा सीख के आएंगे तो चौथी बार तो अगर आप जरूर पास होंगे। और कहीं भी जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे तो आप एटलीस्ट जो बोलते हैं बेइज्जती वाली बात जो होती है वो सब नहीं रहेगा। आप आसानी से काम कर पाएंगे और आपसे कंपनी भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, इस तरीके का मैं वीडियो अपने चैनल पे लाते रहता हूं। तो फ्रेंड्स, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।